all about edge. Experience says a lot. And when we talk about experience, we start this morning by a small prayer. Small prayer जिसको हम अपने टीचर्स को, मेंटर्स को, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि जिसके कारण आज हम यहाँ पे एक सफल सक्षम इंसान के तौर पे हम यहाँ पे हैं. I think no one, we can never be big enough, strong enough, bold enough, we can never be rich enough not our teachers, elders, mentors, gurus. So आइए एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज के दिन को शुरुआत करते हैं. Join me in this. त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव. त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव. त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव. Thank you so much for joining me in this prayer. And मुझे मेरा ये मानना है कि दुनिया में कोई भी इंसान सेल्फ मेड नहीं होता है. उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है. और ऐसे लोगों को हम शनिवार का दिन समर्पित करते हैं, डेडिकेट करते हैं. So during the week you may not have time to meet those people, to talk to those people who have made a difference in your life. It could be seniors, elders, your gurus. So remember to reach out to them every Saturday. Call them, wish them, express your gratitude and feelings towards them, and I'm sure it will make every one of them feel very special. Okay, having said this, what else we do? The most important way, और मैंने ये देखा है कि आदि काल से, प्राचीन काल से, people have looked for references, people have looked for connection. And when we talk about references, क्या संभव है उस कॉन्टेक्स्ट में हम कायापलट में शनिवार की सुबह मनाते हैं आपके बीच में एक खास स्टोरी के साथ, जिसे हम बोलते हैं सैटरडे. वो दिन होता है जिस दिन हम स्टोरीज शेयर करते हैं, स्टोरीज ऑफ द वीक. और ये स्टोरीज ऑफ द वीक आप ही के बीच में से कुछ मेंबर्स जिन्होंने आपसे कुछ महीनों पहले ज्वाइन किया होता है, उनके परिणामों को हम आपके साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं, प्रस्तुत करते हैं. और हर स्टोरी अपने आप में खास है. और मेरा ये मानना है कि कायापलट को पिछले 32 महीनों में 8 शहरों से 273 सिटीज तक पहुंचाने में इन स्टोरीज का बहुत बड़ा रोल है. ये कहावत है कि दो परफेक्ट स्ट्रेंजर्स के बीच में एक अच्छी सी स्टोरी डाल दीजिए, आप उनको जिंदगी भर के लिए दोस्त बना सकते हैं. और यही मैंने देखा है कि स्टोरीज वो माध्यम है जिसके माध्यम से हमें एक नया रेफरेंस मिलता है. हमें स्टोरीज संभावनाओं का प्रतीक है. स्टोरीज कनेक्ट करती हैं, इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं कि हम कुछ करें. कितने लोग एग्री करते हैं? दूसरों के परिणामों को, दूसरों की सफलताओं को देख करके हमें ये दिखाई दे जाता है. और एक्चुअली जब हम दूसरों की स्टोरीज को सुनते हैं तो हम ऑल्टरनेट लाइफ टाइम को जी सकते हैं. हम दूसरों के जीवन से हम ये भी सीख सकते हैं कि उनके जीवन में क्या हुआ. तो हम अपने काम में रहते हैं लेकिन दूसरों के बारे में नहीं जान पाते. जब हम दूसरों की कहानियां सुनते हैं तो हम अपने जीवन में भी उनके अनुभव का लाभ लेके उसका लाभ ले सकते हैं. इन दिस कॉन्टेक्स्ट हर स्टोरी खास होती है, लेकिन इस बार की स्टोरी बहुत खास है क्योंकि कायापलट, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस, एवरी स्टोरी इज लाइक दिस. इस स्टोरी में सबसे बड़ी खासियत क्या है? ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वजन घटाना है तो कायापलट ज्वाइन करो, और हमारे पास ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं, 50 किलो नाउ 52 kgs, 47 kgs, 30 kgs. और जैसा मैंने बताया कि 32 महीनों में 31,000 से ज्यादा किलो वजन कायापलट के मेंबर्स घटा चुके हैं.
तो बहुत ये लगता है कि यार ये वजन घटाने के बारे में है, लेकिन हम हमेशा से बोलते हैं कि एक तरफ कायापलट में हैं ओवरवेट लोग, अनहेल्दी लोग, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो एक्सट्रीमली फिट हैं, एक्सट्रीमली हेल्थ कॉन्शियस हैं, और दे आर हेयर टू बेटर देमसेल्व्स। और कायापलट प्रोग्राम जो 4 लेवल्स पे काम करता है। तो आज की स्टोरी की खास बात क्या है? आज की स्टोरी की खास बात यह है कि ये जो मेंबर्स हैं, इनका वजन ज्यादा नहीं था, बहुत ज्यादा वजन नहीं था। आप कहोगे अरे आपको वजन घटाने की क्या जरूरत है, और उनको हो सकता है उनके दोस्त लोग बोलते भी होंगे कि तुझे वजन घटाने की क्या जरूरत थी, वो हम उनसे पूछेंगे। प्लस नॉट ओनली दैट, शी डजंट नीडेड टू लूज मच वेट। उनका प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन शी इज अ मेडिको, शी इज अ डॉक्टर, ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन जो लोग नहीं है समझते, तो उनको मैं गायनेकोलॉजिस्ट, जो महिलाओं के विशेषज्ञ होते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन प्रसूति रोग विशेषज्ञ बोला जाता है इनको हिंदी में, जो प्रसव से संबंधित, कंसेप्शन से पहले, कंसेप्शन, कंसेप्शन के दरमियान, फिर डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी, ये पूरी जो काम करते हैं उन्हें ऑब्स्टेट्रिशियन बोलते हैं। उसकी स्पेशलिस्ट है, बहुत हम्बल है और बहुत स्पेशल, बहुत खास है। और आपके वर्चुअल अप्लॉस के साथ मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा नन अदर देन डॉक्टर मनी माधुरी। तो विद द वर्चुअल वाइब्रेशन, क्योंकि आपको ये मालूम है कि कायापलट में एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है, तो यूज दिस वर्चुअल वाइब्रेशन टू मेक हर फील स्पेशल। When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. ये जो स्टार्टिंग म्यूजिक आपने सुना, इसको सुनते ही मुझे लगता है आपको रियलाइज हो गया होगा कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डॉक्टर मनी माधुरी इज देयर। यस, शी इज अ डीपली rooted in spiritual values. She comes from a family of pastors, और जो लोग नहीं समझते हैं, पास्टर्स मतलब प्रीस्ट, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन जिनका रहता है और जो लोगों को स्पिरिचुअल वैल्यूज देते हैं, उस बैकग्राउंड से डॉक्टर मनी माधुरी आती है। लेकिन मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा उनके बारे में, क्योंकि आज उनका दिन है। तो डॉक्टर मनी माधुरी, गुड टू हैव यू with us today as a special guest, as a part of this special story. Congratulations that you have reached your ideal body weight. Thank you, sir. Thank you so much. And Dr. Mani, and just a little bit about, मैंने कोशिश की, लेकिन आपका जो बैकग्राउंड है वो बहुत खास है। मैंने आपके बारे में पढ़ा तो मेरा रेस्पेक्ट आपके लिए और बढ़ गया। जो काम आप करते हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। और मुझे तो लगता ही नहीं है कि आपके 2 बच्चे हैं, 12 साल और 9 साल, राइट? Yes, 13 and 9. 9 years and 13 years. Yeah, sir. Actually, 14 years. 14 years. Can you imagine this pretty good-looking girl sitting in front of you? यही बोलेंगे ना, लड़कियों को तो लड़की ही बोला जाता है हमेशा। And she's got 14 year and 9-year-old 2 sons. What an amazing feeling seeing you in this shape, Dr. Mani. So how do you feel, by the way, today morning? I feel really good. I feel my best version, and I'm really grateful and thank you to our program, to our Kayapalat 24 program, for bringing out the best version from me. So I really feel good, sir. No, we can see that. डॉक्टर मनी, थोड़ा अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, आप कौन से शहर से हैं वो सबको बताएं। मैं तो जानता हूं, लेकिन मतलब बाकी लोगों को बताएंगे तो अच्छा रहेगा। सर, मैं हैदराबाद से हूँ। My parents and in-laws दोनों हैदराबाद से हैं। My husband is Dr. Suhas Maslamani. No, he's an orthopedic surgeon. I have 2 children, दोनों
एक 14 years का है, एक 9 years का है. Both of them are studying. I am an obstetrician and gynecologist, where we take deliveries and take care of औरतों का problems को देखते हम. And I've been yeah, that's my photograph. Wow. This is my Wow. college, sir, where I come. I did my MBBS in Christian Medical College, Ludhiana. Awesome. Yeah, और मैं PG भी उधर से ही पढ़ी हूँ, Christian College से. Wow, we can see your background and so beautiful seeing you from a kid. And कितने लोगों को अच्छा लग रहा है ये जर्नी देख के, क्योंकि हम सबकी जर्नी कुछ इस तरह से रही है. And I am very happy that you passed out from such a prestigious college and look at this. सबकी इस तरह की लाइफ रही है, right? All of us can connect with these pictures. And हम सबके साथ ऐसी पिक्चर्स अपने अपने स्कूल, कॉलेज और उस जमाने की रही होंगी. And Dr. Mani, I am so happy and like we feel कि आप और आपके हस्बैंड दोनों एक मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं और ही इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन. और मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा जो डॉक्टर मनी ने नहीं बताया है. वो मैं ये बताना चाहूंगा कि शी इज क्या बोलूं, ये बहुत समाज के लिए बहुत काम करती हैं. एक मैं हिंदी में बोलूंगा, डॉक्टर मनी यू कैन स्पीक इन इंग्लिश. आई नो कि आपका हिंदी में हाथ तंग है, तो मेरे को सबको एड्रेस करना है. तो अगर आज के सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा हिंदी बोलूं, और डॉक्टर मनी यू कैन फील योरसेल्फ द वे यू स्पीक, यू कैन गो अहेड विद दैट. ओके, तो शी इज लाइक अ फिलैंथ्रोपिस्ट. शी रन्स अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, और इनकी जिंदगी का मकसद भी ये है कि कम से कम खर्चे में लोगों को बेहतरीन मेडिकल केयर दी जा सके. कैसे मैं ये दे सकूं, दिस इज व्हाट शी थिंक्स अबाउट इट. एंड दैट कम्स फ्रॉम हर grooming, that comes from her background, like किस फैमिली में ये पैदा हुई और क्या इनके अंदर किस तरह की वैल्यूज हैं. तो कितने लोगों का रिस्पेक्ट. मैंने जब ये पढ़ा मैंने कहा वाओ, व्हाट अ ब्लेसिंग टू हैव डॉक्टर मनी विद अस, राइट. So with this added information, I want to start this session, Dr. Mani, क्योंकि you are a medical professional. आपने mention किया कि you have been gymming, you have been trying with different kinds of diets, and despite that, I mean, joining Kayapalat, कोई इंसान अगर 4 किलो ओवरवेट होगा ना डॉक्टर मनी, वो Kayapalat ज्वाइन नहीं करेगा. मतलब 90% ऑफ देम. तो यू आर अमंग दोस 10% की 4 किलो वजन कम करने के उद्देश्य से, या व्हाट मोटिवेटेड यू टू गेट स्टार्टेड विद Kayapalat, और इवन लाइक कंटेम्पलेट कि चलो मैं ये करके देखती हूँ. सर, I'm a lady, an obstetrician and a gynecologist. I work 24/7, and I have a very busy husband, and at the same time, I have 2 children looking up to it. So मैं पूरा दिन काम करती थी 24/7, and I see patients whole day. By the end of the day, काफी थकावट रहती थी. I used to get frustrated like everyone else, and I used to get depressed, discouraged. काफी बार ऐसे लगते थे कि when should I give up type. And as this from past 10 years, I've been going through this, and weight loss at the same time, I tried everything for my weight loss from past 10 years. During my pregnancy, I was 75 kgs. And first year pregnancy khatam hote ek saal mein hi I came back to 60 kgs. But after that, I was trying for my that ideal weight, which I always wanted to be in 55, 56. मैं जिमिंग किया, मैं कीटो डाइट आई फॉलोड, इंटरमिटेंट फास्टिंग आई फॉलोड, लाइक द वे एवरीवन थिंक्स बस कार्ब्स नहीं खाना देन वी विल लूज वेट. So I always used to just keep on fasting and drinking lots of coffee, and I feel I would lose weight, but somehow it never happened. And at the same time, my health issues and at the same time my fitness issues, both of them were like really worsening. That is when I thought I need to make some change, because I can't take out my frustration anywhere. Whole day, mera patients wait karte just to come talk to me and tell their problems. At the same time, I come back home, my kids wait for me to talk to me and to tell their problems. I can't do anywhere else. I come, I just pray, I leave it on the Lord, I start the next day. But I realized my health issues are becoming bad, and I'm having sleepless nights. I have lots of hair fall. And even though I'm tired, I just can't fall asleep. This all
this all made me think I should make some changes मेरा health में और मेरा fitness levels में, so that my product, my quality of life will improve. That was my main intention. If my quality improves, I can give better quality to my patients and to my surrounding environment, because there are too many people who are dependent on me. That is when I thought about making changes in my health as well as in my fitness. I think आपने जो बोला है ना, this is like completely shaken me and blown me, because मेरा ये मानना है कि as a woman you are already loaded with responsibilities, जैसा आपने बोला, और जो इन्होंने बोला उसको मैं और एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करता हूँ उन लोगों के लिए जो ज्यादा हिंदी भाषी हैं, कि इनके पेशेंट्स इनसे बात करना चाहते थे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते थे, उसका समाधान चाहते थे, ठीक है। घर जाती थी तो बच्चों की एक जिम्मेदारी थी, वो एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये किसके पास जाए? Can you imagine, like any other human being, she used to feel कि she said कि I felt कि मैं give up करना चाहती हूँ। तो पहली चीज तो ये ना मानना है कि being a woman itself is a big responsibility. Then being a mother, another added responsibility. And then along with being a mother, if you have a busy husband as well, who is also a renowned doctor, this further, creates pressure on you, क्योंकि माँ तो माँ ही है, बच्चे तो करना ही, देखना ही बच्चों को तो, and then mother, wife, a busy husband, and then being a doctor, that too obstetrician gynec, जो कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि कहते हैं ना कि जब बच्चे पैदा होते हैं, जब लेबर पेन चालू होता है तो वो ये कह के नहीं चालू होता है कि अभी डॉक्टर मनी सो रही होंगी। कितने लोग समझते हैं इस बात को? और जब उनको जाना होगा, स्पेशली गायनेक, डॉक्टर नेहा इज आल्सो राइटिंग दिस, एब्सोल्युटली इट कुड बी सो ट्रॉमेटिक एट टाइम्स। आप इमेजिन करो कि आपको कभी भी फोन आ जाए हॉस्पिटल से कि आओ डिलीवरी करनी, कैन यू होंगे वहां पे? एंड हैट्स ऑफ टू यू डॉक्टर मनी, आपने बहुत अच्छे से बताया इस बात को। और डिस्पाइट ट्राइंग, you still wanted to do something for yourself, and that got you to connect with this. And in this connection, who did you see and what did that person tell you जिसने आपको बोला कि चलो मैं देख के जाती हूँ, मैं ज्वाइन करती हूँ? Sir, it was Dr. Winnie Thomas. She's my husband's cousin. She's my cousin too. Oh, awesome. She's one of my good friends, and I have this bad habit of going through the screen in the night when I sleep. So every day I used to see her status. She keeps at Kayapalat 24, Kayapalat 24. And I used to wonder, what is this Kayapalat 24? Then I saw the change in her body, and the way she was talking. It is a holistic approach, actually. I mean, the way she tried inspiring me, that happy vibes she kept on sending to us, and everything, there is lots of things transformed in her, because I have seen her before. I delivered her. And the whole thing has changed, her attitude, her talk, and the way she was talking about the health and nutrition. मुझे लगता था कि मुझे भी बहुत पता है न्यूट्रिशन के बारे में, and I'm a doctor myself, and मैं उनको डाइट समझाती थी during the delivery, and but unka explanation was completely different, and the approach towards was different. Then I said, I didn't think I will be so attracted, but I said, why can't I also try once? And when I was thinking about changing my health issues and fitness issues, then I thought I should try it out. I didn't expect this change, but I just came in just thinking I'll just try it out. That's how I got awesome. into. And जो लोग डॉक्टर मनी को नहीं, डॉक्टर विनी को नहीं जानते हैं, डॉक्टर विनी इज अ मेटाबॉलिक डिजीज एक्सपर्ट एंड अ रिसर्च साइंटिस्ट। और डॉक्टर मनी ये बोल रही हैं कि उनके जब डिलीवरी हुई थी तो उनको डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में मैं बताया करती थी, और फिर डॉक्टर विनी मुझे बताने लगी, तो मुझे लगा कि जरूर कुछ ना कुछ है जो मुझे करना चाहिए, सीखना चाहिए, देखना चाहिए। एंड डॉक्टर विनी, कांग्रेचुलेशंस, हाउ आर यू फीलिंग? Sir, I'm feeling great.
to see my sister also transform. It's like awesome feeling because I have seen her starving herself and not eating much. So I has to keep telling her, you have to eat and lose weight. So True. she didn't understand that point. Yeah. And now that she has joined Kayapalat, she knew what education that we get. Yes. And now she is also a fan like me. Thank you so much, Dr. Vinny, and thank you so much for helping us to know such a wonderful human being, Dr. Mani. And at this stage, I would like Amrish ji, can we take Dr. Suhas also on the spotlight? Dr. Saab, what a wonderful day, like meeting you, seeing you on screen with us. Thank you, sir, for having me. And I know both of you are very health conscious and like अपने अपने फील्ड के आप experts हैं and तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा आपने डॉक्टर मनी की ये डिफिकल्ट जो लाइफस्टाइल थी उसको जरूर बहुत सबसे नजदीक से देखा होगा जरूर जरूर सो या बोलिए सर नहीं बस आप बोलिए मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 10 इयर्स की जर्नी थी जिसमें she was like going through tough time trying to lose weight gymming keto and all those kind of things तो आप उसको उस समय किस नजरिए से देखते थे So actually no one knows but we both were MBBS classmates so our journey is almost 24 years 1999 we met in our medical college and आज भी अगर आप देखो तो we still are friends we don't consider ourselves as husband and wife and our relationship hasn't changed even a bit even after children and profession so we consider each other so important part of our life so जहाँ तक मुझे याद है I think Madhuri was her ideal body weight maybe in her MBBS times when she was probably 54 55 kgs and then as she said pregnancy happened both our careers are very stressful I almost operate 14 hours a day, literally from morning 6 o'clock to evening 6 o'clock or 7 o'clock sometimes. So, and then I used to see her, she was always very fit and very cautious. But ek stage aata tha after which her body would just not respond to anything she does. She would hit 60 or 59 kgs and then it's like a plateau and anything she does won't work which she has already described, right from gym to intermittent fasting and so many ways, because her fundamentals were not right. Like how Winnie said, she would almost spend the whole day on 4 or 5 coffees and then would just have one meal. You know, all this struggle was not to put on weight, but whatever weight she had and what she badly wanted to lose, specifically for her self-esteem, you know, more than anything else, she was just not able to do it. And then when she said she wants to join this program, I said, okay, it's another attempt for her. And she would want to try everything under the sun. She's an excellent dancer. So she tried Zumba, she tried body weight exercises. She tried everything. So I said, okay, go ahead. There's nothing to stop you. If you feel there's something, aap jaake kariye. And then the determination she had is amazing because during this time, I think we had a trip to Italy and France. And then in January, we had another trip to Singapore, Malaysia, and Thailand. And even during this time, she carried her protein shake with her. She carried her medication with her and she was doing her exercises. हम सबका discipline तो कहीं और चला गया. We were doing everything what we wanted. But she was so determined. So I really admire her for that. And it's not in knowing, having knowledge is important, but putting it to use and having the determination to say no when you are not supposed to do something and achieve a result, I think it's even more sweeter. So I really appreciate her. Jitna effort unhone lagaya, and then the day she got up and she went onto the scale and she said, I'm 56, I could see the joy in her face. And I didn't know it was such a big deal till I joined your group. The other thing I would say is, as a community, as a group, you're doing a fabulous job
because people get inspired and then they lose inspiration very quickly. But I think this program is making sure that that level of inspiration and the education you give is always maintained every single day. Right. And I think that is also helped her a lot, and trying to overcome all the um, attractions and all the other things that she had, and she was able to say no because of the feeling she had and the encouragement she was getting by seeing all that. Right, sir. That's amazing. What an amazing, journey that you have shared, and 24 years married. And मैं ये जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि क्या डॉक्टर मनी हैज रीच्ड हर, जब आपकी शादी हुई होगी वो वाली शेप में आ गई? बिल्कुल. ओके, तो आपकी शादी के, एंड आई नो यू आर आल्सो वेरी हेल्थ कॉन्शियस, एंड आप भी अपना सेहत का ध्यान रखते हैं। और एक बात जो डॉक्टर सुहास ने बोली कि मेडिकल प्रोफेशनल होने का एक, अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल हैं, आप अनहेल्दी हैं, आप ओवरवेट हैं, तो उसका भी एक बर्डन रहता है कि हम दूसरों को गाइड कर रहे हैं और खुद का ध्यान नहीं रख पाते। ये डॉक्टर सुहास ने बोला कि वो सेल्फ एस्टीम वाली जो बात थी कि उनको लगता होगा आपको कि मैं दूसरों को राइट बता रही हूँ, दूसरों को ये सब बताती हूँ और खुद नहीं कर पाती। एम आई राइट डॉक्टर सुहास? बिल्कुल, बिकॉज इतने पेशेंट्स माधुरी के पास आते हैं, and lot of husbands insist that they get treated by Dr. Madhuri because उनको ये जानना है कि डिलीवरी के बाद उन्होंने ये शेप कैसे मेंटेन किया। तो more than the whole process of delivery and having a well healthy child in their hands, they wanted her because of how good she looks in spite of having 2 children. Yes. So it definitely matters, especially in a medical profession. It does matter, right? So I'm very happy for both of you, in fact, and another secret for lasting health and happiness is कि शादी के बाद भी दोस्त बने रहें। बिल्कुल सर। True, sir. तो हमें आप लोगों को देख के बहुत खुशी हो रही है। डॉक्टर मनी, when you like as डॉक्टर सुहास said कि ठीक है एक और प्रोग्राम, चलो मानेगी तो है नहीं, करेगी तो अपनी मर्जी, करेगी तो सही, तो कर लो तुम एक और प्रोग्राम, start another one. So then you started this another one, and like what were your initial thought? You knew that this is the program, or at what stage you felt that this program is working for you? When I started the program, sir, first few days I was not very serious. It's like they talk and we will listen. But the best part about the program is the timings. It didn't demand much time from me. तो कब मैं जिम जाती थी ना सर, 1 hour, half an hour, I joined in F45, I joined in Cult Fitness, I joined in best gyms in Hyderabad. पर मेरा ट्रैवल के लिए आधा घंटा, वापस आने के लिए आधा घंटा, and 1.5 hours staying there. That used to be very time consuming for me. And with मेरा patients के साथ surgeries and all would have been really difficult for me. So then once I joined into this program, first thing which was very good was time management. 7 o'clock sharp, we get into the fitness fit hours, and from 8 to 9 prime sessions. These two things were really, it's just demanded to us from me, sir. That is what I liked out from the program. And when I went into other gyms, I used to skip this stretching, and I used to skip this warm-ups. But here the practically the way they do warm up and do the program fitness thing, and then after that going into stretching, they cover everything. When I used to go to gym, I used to end up with lots of aches and pains. And next 3 days, I never used to go to the gym. Here it is not like that. I definitely have a better approach for the next day also, and I'll be joining in the next fit hour also. So I didn't have any hurdles. I mean, your question was, did I face any hurdles? Actually, I didn't have any hurdles, because even with my busy schedule, I'm able to attend my fit hours well. Sometimes I do miss my prime sessions, but I didn't have much problem. And by the end of 1 week, I was 100% convinced about it.
Awesome. So आपको since like you didn't find this program like overbearing and demanding too much Not at all. time or effort from you, right? Not at all. Fantastic. So कितने लोगों को ये लगता है कि जो डॉक्टर मनी माधुरी को लगता है कि ये प्रोग्राम डुएबल है, प्रैक्टिकल है, अपने व्यस्त दिनचर्या के साथ भी आप इस प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हैं, और आप जैसा देख सकते हैं कि ये बिजी डॉक्टर होने के बावजूद भी ये इस काम को फॉलो कर पा रही हैं। तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स कि यस, दिस इज द सीक्रेट। एंड डॉक्टर मनी, व्हेन वी वर डिजाइनिंग दिस प्रोग्राम, I wanted to keep it simple. मैंने ये देखा है कि बहुत सारे फनी प्रोग्राम्स होते हैं, जब लोग किसी चीज को फॉलो ही नहीं कर पाते तो वो उसके परिणाम कहाँ से पाएंगे? फॉर एनी रिजल्ट इट हैज टू बी डूएबल, इट हैज टू फिट इनटू योर लाइफस्टाइल rather than requires major changes in your lifestyle. और ज्यादातर जो तरह तरह के जो प्रोग्राम है वो आपके दिनचर्या में उतार चढ़ाव इतना बड़ा चाहते हैं, मतलब लिटरली इट इज लाइक स्टैंडिंग ऑन योर हेड to lose weight, and that is what makes people कि वो जब तक सर पे खड़े हो पाते तब तक शायद कुछ फर्क पड़ जाता है, बाद में वो नहीं कर पाते तो वो नहीं हो पाता है। So being part of this program now, कितना टाइम हो गया आपको इस प्रोग्राम में? 3 months, sir. 3 months। और आपने 4 किलो वेट कम किया, 3 महीने लगे शायद। तो कितना टाइम लगा पहले तो आपको 4 किलो? 3 months, sir. 3 months। अब Yeah. किसी और को, आप तो डॉक्टर हैं, आप तो समझती हैं, लेकिन बाकी लोगों को अगर किसी को हम ये बोलेंगे 4 किलो वेट 3 महीने में कम, ये प्रोग्राम इतना ही ट्रांसपेरेंट है। हमारे यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 3 महीने में 32 किलो वेट कम किया है, लेकिन आपके सामने ये परिणाम है जिन्होंने 3 महीने में सिर्फ 4 किलो वजन घटाया है, सिर्फ 4 किलो। नोट दिस। तो कैसे आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखा, कैसे आपको अच्छा लगता रहा कि नहीं मैं सही ट्रैक पे हूँ? Sir, first of all, my motivation is completely from my coaches. Whenever they talk about these Weight Watchers, or whenever they talk about in these prime time sessions, they clearly tell us this weight loss, it keeps on changing. It depends on different people's body. So it all depends upon our body composition. And I knew, especially I knew, for me this 4 kgs is like 10 years effort. Okay, it is not like this. So I was always motivated even by seeing 300 grams, 400 grams, 500. And whenever I increase, when I call up Dr. Vinny or Ipsita ji, or whenever Avinash sir speaks or Kakuli ma'am speaks, they keep telling us, koi baat nahi, Kakuli madam, koi baat nahi. She keeps saying that. You don't need to worry about it at all. So I was not put down any time when I increase 1 kilo बढ़ गए तो भी 500 grams बढ़ गए तो भी. And this MIW sessions of everyday tracking weight, everyday my inch loss was good. So I was very happy. So it always kept me motivated. Especially my coaches kept me motivated throughout the journey, and their sessions explaining about the weight gain and loss every day, the way it changes. So I took all of them quite seriously, and मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं हुआ sir, keeping myself motivated in this 3 months. Like the way my husband said, I went out for tours, but still I was able to manage my diet. And I think it is the way you look at it, that because you had patience, and ये जो लाइन आपने बोली ना, ये बहुत important है कि ये 4 किलो वेट 3 महीने का एफर्ट नहीं है, ये मैं 10 साल से कोशिश कर रही थी जो वापस नहीं जा रहा था। इसलिए मुझे 4 किलो 3 महीने में कम होने से मैं डिसअपॉइंट नहीं हुई। जो 100 ग्राम भी कम होता था उसको मैं पॉजिटिव फील करती थी। और कोचेस, एंड आप देखो कि कितनी सुंदर एक कम्युनिटी बनती चली जा रही है हैदराबाद में। और kudos to team Kayapalat and Kakuli and Avinash, like the way they are doing hand holding. Can we give all the coaches a big round of applause for the wonderful work they are doing? And I'm so proud of our team, like, because these are the values which we wanted to help you and hand hold you every, क्योंकि कई हमारा अपने ऊपर जो विश्वास होता है वो कम होता है बजाय हमारे कोचेस का, कि जो कोचेस हमारे साथ काम करते हैं वो हमारी हैंड होल्डिंग करते हैं। और कायापलट के बारे में मैं यह कहूंगा, यहाँ पे हर कोच उस जर्नी से गुजरा हुआ है जिस जर्नी पे आप हैं। मतलब कायापलट में सारे कोचेस एक माँ की तरह हैं जिसने बच्चे पैदा किए हुए हैं, उसको लेबर पेन क्या होता है वो मालूम होता है। अविनाश की खुद की जर्नी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, काकुली, इप्शिता, डॉक्टर विनी, ऑल ऑफ दीज पीपल, लाइक, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसीलिए हम बोलते हैं नेवर आस्क फॉर वे फ्रॉम पीपल हु हैव नेवर लेफ्ट होम। उन लोगों से कभी रास्ता मत पूछिए
जो कभी घर से बाहर नहीं निकले हों। डॉक्टर मनी, मैं आपके पास आइडियल बॉडी वेट ट्रॉफी तो पहुंच गई, क्योंकि आप हैदराबाद में, बाकी लोगों को तो हम यहाँ से उठा करके पहले स्क्रीन पे देते हैं। ओके, तो यू ऑलरेडी हैव रिसीव दिस। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जानना चाहता हूँ आपसे, और ये मैं कायापलट में बहुत सारी महिलाएं हैं, women, they are here part of Kayapalat, and you being a woman, number one, number two, you being a gynecologist, number three, you are being an obstetrician. Okay, तो आपके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे, जैसे कि इनफर्टिलिटी के, पीसीओडी के, देन यू मेटाबॉलिक सिंड्रोम, आई मीन उस तरह के, और जब आप डिलीवरी कराते हैं लोगों की, और उसके बाद पोस्टमार्टम भी, जैसा डॉक्टर सुहास ने बोला कि लोग ये पूछते हैं कि आप कैसे मेंटेन करते हैं इन सब चीजों को। तो उस कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो पीसीओडी हो, चाहे वो इनफर्टिलिटी हो, चाहे वो पोस्टमार्टम कमिंग बैक इनटू शेप हो, उस बैकग्राउंड से आपको क्या लगता है कि क्या कायापलट प्रोग्राम वेल स्ट्रक्चर्ड साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करता है? Definitely, sir. I agree with that. So, first of all, when it comes to the nutrition part for all these patients, like the way I said, I had a myth of just not eating it, thinking of losing weight. But in Kayapalat program, we are always taught about micronutrients, kaise hai, macronutrients, and about the vitamins, and how we have to take them in discipline at right time. वो बहुत important है, which I didn't never used to do. मैं तो breakfast खाई नहीं sir, last 15-20 years. MBBS में I never used to take my breakfast. Even after that, हमने मेरा directly lunch was at like 12 o'clock or 1 o'clock. That too very little amount of lunch. But this program taught us कि हमारा macro and micronutrients, and at the same time vitamins in all the right proportions of 40, 30, 20, 10, which Avinash sir keeps on talking about it. It's like into our vein and into our blood. So when we take those things at the right time, all the products I'm talking about, the morning shake and the afternoon, how we use that palm puree and the night shake, all these things together will definitely help for any disease, I feel. Just especially for my category of patients, that is infertility and obesity, and for the postpartum obesity, in तीनों में weight loss is very, very important. It's a very crucial thing. To that matter, when I have to talk about my fitness goal is definitely my patient's fitness goal. I want to talk to them right things and facts, not just saying whatever I feel like. Just एक pep talk देकर encourage करके बेचना नहीं. Facts बात करना है मैं उनसे, and वो facts समझाने के लिए this Kayapalat program has really helped me. कैसे बात करना? How do I explain to them? And how do I have to expect that weight loss and mental health as well as the physical health? बहुत सारा infertility patients, when they come first 10 minute तो रोते रहते sir. They just keep on crying. कि 10 साल का infertility, 15 साल का husband wants to leave them, or the way they have the same thing. Madam, हम सब try कर दिया, gym करते, मैं कुछ भी नहीं खाती, मैं, but क्या क्या खाना है और कैसे खाना है और क्या लेना है, and at what time they have to take. ये चीज, this approach in Kayapalat really impressed me. This is the reason why I wanted to come. I mean, I was willing to give the story of the week also, because people should know those important nutritional facts which is taught in Kayapalat. And how, or at the same time, वो लोग हमको इतना insist करते follow करने के लिए, and how they push. The way these programs are done, MIW, हर minute कितना भी busy schedule है sir. Now 1 to 2 I close my door. आधा घंटा में कोशिश करते हैं खत्म करने के लिए, because salad काफी देर लगता है मुझे खाने के लिए, but आधा घंटे में I'll try to finish, which I never did in my life. 1 to 2 मेरा meal time, it was like 3 o'clock. So now after joining in MIWs, I make sure I do that. One day I forget, I see everything in the phone again. I again tell myself, no, I have to put. So this program has helped me, especially in this nutritional aspect. And the same thing I can tell my parents, my patients also, about this obesity or about the infertility and about the postpartum exercises or about the nutrition, sir. Right.
Right, ma'am. 1 second. Just give me a minute, ma'am. Please, just a second. My battery is going a little low. Just give me a minute, Amrish ji. You can keep sharing your MIW experience. Right. I'm sorry. डॉक्टर मनी ने मेरी आवाज आ रही है अमरीश जी? Yes, sir. या डॉक्टर मनी ने ये बात बोली कि मैं एक कारण जो मेरा इस स्टोरी ऑफ द वीक में आने का था कि मैं इस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस करना चाहती थी कि जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं, पीसीओडी के पेशेंट्स हैं और जो पोस्टमार्टम बेली फैट कम करना चाहते हैं, वो जब इनके पास आते हैं तो इनफर्टिलिटी वाले आधा घंटा रोते रहते हैं, हमने ये कर लिया और वो कर लिया, और दे नीडेड टू नो व्हाई दिस इज नीडेड, क्यों सही खुराक सही मात्रा में सही समय पे जाना जरूरी है। वो पॉइंट को स्ट्रेस में करना चाहती थी, और वेट लॉस प्राइमरी है ऐसे कॉन्टेक्स्ट में। डॉक्टर मनी, वन मोर थिंग, यू बीइंग अ डॉक्टर, आई कांट लेट यू गो सो इजीली। अभी हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हम ये शेक लेंगे तो उसका साइड इफेक्ट होगा, उसका कोई आफ्टर इफेक्ट होगा। तो ये भी एक मिथ जो है कि बैलेंस न्यूट्रिशन कोई साइड इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, इस बारे में आपके कोई थॉट्स? Sir, I did had this myth before joining into this program, because there were lots of patients who used to come, हाँ मैंने ये शेक पिया but मैडम मुझे ये प्रॉब्लम हुआ। I shared the same thing with my coaches. Initial days itself, they very clearly explained, Avinash sir explained to me, Vinny and Deeksha ma'am, they very clearly explained, if anyone has such myths, okay, get the test done before itself. Get all those tests done. See the results after you take this. Okay, first, that is practically you can see. Second thing, personally, I have seen. I have gone through the products, and I have also read about the how to make and everything. There is 100% nothing wrong in taking these products, and that too the right amount of protein and the right amount of carb is going. The other bad myth, sir, carb nahi lena hai, zero carbs karna. That was I lived in that myth, zero carbs mein. But every cell needs carbohydrates, and the way, and I think this all comes through these prime time sessions, sir, which you all take it, and about the insulin metabolism. When we listen to all these things and when we take those shakes, I don't think so. I don't know for 100% sure no one will have any problems or any complications through shake. But everyone should know the quantity and the amount how they have to take according to their body weights. Well said. Thank you so much. And कितने लोगों को ये अच्छा लगा? अगर आप भी महिला हैं या पुरुष हैं, आपका कोई प्रश्न है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके बिहाफ पे वो प्रश्न पूछने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पे वसंता लिख रहे हैं कि I was infertility patient, Dr. Mani Madhuri gave me confidence and I conceived. She made my life. क्या आप भी चाहते हैं कि कोई आपके लिए ऐसे लिखे, She made my life? You know, this is what this community has become. And Dr. Mani, you talked about MIW, you talked about balance eating, the palm theory, all 5 food groups. You talk about exercise, you talked about balanced nutrition, and also like जो Kayapalat में एक चीज हम करते हैं, weekly detox, turbo drinks. Did you try that as well? आपने उसको भी follow किया था? Yes, sir, I did try weekly detox. I definitely agree that one day of rest gut को देना है, and somehow miraculously detox के बाद सबका weight थोड़ा ज़्यादा ही कम दिखता, तो I love the detox. I used to do that, but little difficult. Sometimes taste का मुझे ऐसे लगता था कि थोड़ा like the way shake is so tasty, detox drink is not so tasty, sir, to be very frank. But Vinny gave me some tips: add more aloe and add more of afresh. And I used to do this thing with my ingredients, but I used to do that, sir. And it was definitely helpful for the gut to give that rest time. Weekly once we give that rest, and it definitely acts better. And also like many people, like अभी हमने ये बात नहीं की, you feel like skin, hair quality, all of these things, like आपने
वेट लॉस के अलावा क्या क्या बेनिफिट्स देखे। और जाने से पहले एक क्वेश्चन और आया मधु बारनवाल का कि यूरिक एसिड के साथ यूरिक एसिड बढ़ने का डर लगता है उनको, उनको किसी ने शायद ये बोला होगा, जबकि यू आर नॉट अ नेफ्रोलॉजिस्ट, बिकॉज नेफ्रोलॉजिस्ट भी है, बट अगर आप उसके बारे में कुछ कमेंट करेंगे तो वो भी। लेकिन उससे पहले आपकी स्किन में, आपने अपने हेयर में और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिले? So hair, I did mention before also, I used to have lots of hair loss, sir. After starting these shakes, it's commendably decreased. Not only shakes, I used collagen also, the skin boost also. Skin booster. Yeah. So with, and all of us know the skin mainly, the skin as well as the hair has lots of collagen, and it is mainly because of that. Good healthy collagen should be there. So I used those products and my hair loss has disappeared. And somehow ek 5 दिन I forgot to take collagen, and then again I had some problem yesterday. Then I again suddenly remember, no, I have to use it. Consistency is also important, sir, in this. And not only for the shakes, for everything, for vitamins and for shakes and for everything, consistency is important. Every day we have to take it. हम स्क्रीन पे आपकी तस्वीरें देख पा रहे हैं, पहले वाली और अभी वाली। क्या मैं बोलूं, क्या कॉम्प्लीमेंट देना चाहेंगे आप डॉक्टर मनी को? जल्दी से देखो, उन्होंने इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी। अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स लिख दीजिए जल्दी से चैट बॉक्स में उनके लिए, ये ताकि वो बाद में ये सारे चैट बॉक्स का हम आपको स्क्रीनशॉट भेजेंगे ताकि आप पढ़ सके किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आपको आ रहे हैं। आई वुड से यू लुक स्टनिंग, यू लुक स्टनिंग। और जब आप अपने बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएंगे ना, तो कम से कम बड़े वाले बच्चे को तो ये सुनने को मिल ही जाएगा, तुम्हारी मम्मी नहीं तुम्हारी बड़ी बहन लगती है। I don't know, have you got this kind of compliment? Yes, yeah. You already got that? Yeah, I do. Awesome. What a feeling, what a feeling. Dr. Mani, last, if you want to add something like Madhu Banwal asked uric acid का connection, तो उनको भी ये क्लैरिटी थोड़ी सी जरूरी है कि मैं नहीं दूंगा, आप दीजिए, आपके मुंह से जाएगा ज्यादा अच्छा। Uric acid metabolism, yeah, they definitely talk about the meat protein. If you have high meat protein, that is when their uric acid levels go up. This is all the soya protein is what we are taking with the Herbalife. It's a plant protein which we are basically taking products as such. So I don't think so. That is what I feel. I don't think so. It should make any difference in the uric acid metabolism. No, you are absolutely correct. क्योंकि meat protein is the source, and especially meat that जो lean fish chicken में भी आप ले सकते हैं। मीट, रेड मीट अवॉइड करना होता है जिसमें प्यूराइन होता है which creates uric acid। और यूरिक एसिड का दूसरा कनेक्शन वेट के साथ है, और अगर आप वजन कम करते हैं तो उससे भी आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाता है। और जैसा हम हमेशा से कायापलट में बोलते आते हैं कि इंसान का शरीर दूसरी मशीन की तरह है जो अपना बेस्ट काम करता है अपने आइडियल बॉडी वेट पे। कोई भी मशीन उठा लीजिए, कार, मोटरसाइकिल, एनीथिंग, उसका एक पर्टिकुलर पेलोड होता है। एक पर्टिकुलर पेलोड मैंने बोला जैसे क्योंकि अभी अभी कल ही SSLV 2 को लॉन्च किया, उसका एक वो होता है, तो एक पर्टिकुलर वेट के ऊपर हमारी बॉडी आइडियल काम करती है। तो अपने वेट को आइडियल बॉडी वेट पे लेके जाएं, आपकी मेजॉरिटी ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल गो अवे। एंड लास्ट, बिफोर यू गो डॉक्टर मनी, आई वांट टू टॉक अबाउट द फ्यूचर। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन फ्यूचर? योर विजन फॉर योर वर्क, योर विजन फॉर योर हेल्थ, फिटनेस, योर पेशेंट्स, हाउ डू यू वांट टू गो अहेड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स? So my vision for myself, I want to stay in Kayapalat throughout, if God wills, and want to maintain my ideal weight. Like the way I said, consistency is very, very important, sir. If we don't have this community and this push, there is most of the times as females or as busy people or busy obstetricians, we tend to lose that, though we reach our ideal weight. So being consistent, we need a community. If there is no one to tell us or to, give that applause or to tell us, yeah, you're going up or you're going down, it is difficult to stay. And further to improve also, like the way when we had again meeting when Avinash sir was telling 5-kilometer run next, what we all have to plan. So August, me and Dr. Vinny we are planning first initial 5-kilometer run. And this is so good, something which is not obstetrics and gynecology, believe me. So I want to do and, be more healthy and
think about my health also, not about my patients when it comes to my wish. And then about the endurance, further strengthening and endurance. So Avinash sir gave us lots of insights about this, how we have to, I mean, the way personally he take interest and care and talk to us about these things. So slowly, first now for this next few months, it's the 5 kilometers run, which I have for my fitness, and then stay in my ideal weight and not lose it. And for my patients is my actual vision, sir. I want to tell them more about this nutrition and take more time and talk to them and really cut down on this obesity problems. I really feel bad when they can do it if they know about these programs, and it's just lack of awareness, because of which they are not able to achieve what they want in life. So I want to improve that part and tell all of them about these programs, or about the nutrition and about our diet schedule which we follow. Thank you. And I think you can do wonders with a background like yours, क्योंकि बहुत सारे लोगों में जिसे हम कहते हैं ना ignorance about nutrition, ignorance about exercise, healthy active lifestyle, जिसको हम लोग represent करते हैं. And when it comes from a doctor like you, and especially a person who is like so deeply rooted in spiritual values, who is reaching out to people, already doing philanthropy, social work, charitable hospital, तो ये बहुत बड़ा काम है. और this is what changed my life, Dr. Mani, years back when I decided to pursue and get into this direction. And most of our coaches, all of us have this, we believe that the wellness of the world is our responsibility, कि हमें जाना है, हमें बताना है, हमें पकड़ना है, हमें चलाना है, हमें करवाना है लोगों को. This is exactly how we feel, like the way you feel. So this is all for today. We have taken longer than usual. Thank you so much. And once again, wish you all the best and congratulations reaching your ideal body weight. अगले सप्ताह